फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers. You are watching the Cricket Next YouTube channel. India versus England, 4th Test Day 2 in Ranchi. And as we speak, India is on 34 at the loss of one wicket. That one wicket being of Rohit Sharma, the captain of the Indian team. England got all out on 353 today. Joe Root again remained unbeaten. Indian bowlers had absolutely no answers to the orthodox Joe Root that we all remember. When he came out, Indian bowlers had to obviously step down, and he showed his class. And India is chasing a mammoth total. They are 319 runs still behind. They have 9 wickets. Jaiswal and Gill are on the crease. Well, to talk more about today's day and the match so far, I have with me Jamie Alter and Taus Rizvi. Hi, Jamie. Hi, Taus. Jamie, I'll start with you. 353 runs. Do you think this is a score decent enough for England, or do you think India will easily chase this down in the first innings? यार आई थिंक वी ऑल सेड यस्टरडे कि 350 से पहले निपटा दो हो गया बट दे गॉट देयर राइट इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया कि रूट वाज ओके रूट ही इज नॉट आउट बट के पारी खत्म हो गया जहां पे इट डिड बट लाइक आई मीन हैड दे नॉट लॉस्ट रोहित आई थिंक द मूड वुड हैव बीन much better. I mean, halanki Jaiswal is looking like $1 million, especially those drives down the ground. Yeah. But I think, like I said yesterday, I think personally for me the damage was done once they allowed them to get from 112 to double that score. जैसे मैंने कल भी कहा था, जब वो 260, 265 पार हो गया, keeping in mind the way I think or how tough I think it'll be for India to bat in the fourth innings, once it crossed 250, 60. मुश्किल है. Then it was like, yeah, 300, 315. If you want a round figure, 350 for me was the maximum they should have got to. पहुंच ही गए वहां पे, but it's tough, man, because this pitch is not easy to predict. Yesterday I thought it would be up and down. For 2 sessions, it was almost like a batting beauty almost. So you're going to have to bat very very well, क्योंकि जेम्स एंडरसन का जो एक काम था, again 3 मैच लगातार 41 की उम्र में, it was with a specific plan, and I'm sure part of that plan was to get early wickets because that's what he does. So Rohit ka wicket nikalna, good ball. Not going to be harsh on Rohit because that was what James Anderson does. But Gill is not looking too confident. तो यहाँ से मतलब अगर if India get to 350 Kanaf, I'll be very very pleased. यहाँ से let's just put it like that. Absolutely, it's a mountain to climb for the Indian batters as of now. Taus bhai, what's your thought? What do you have to say about the England score, and do you think India will chase it down? Again, Jamie bhai, whatever Jamie bhai said, exactly. We were expecting them to get out early, yaar. In fact, 325, 25 runs ज़्यादा हो गए. So difficult. 350. I mean, the wicket is not that bad. I mean, if you look at, unless आप वो रोहित शर्मा का dismissal, and if you compare Jaiswal's batting, I mean, it looks contrasting. Jaiswal is at ease right now. He's playing with $1 million, of course. The drives that are coming in, he's in like top form, confidence next level तक पहुंच गया बंदे का. और again, I would say कि यार, now it depends on this guy to rescue, क्योंकि 350 is still, I mean, it's a big total. Even though England might not be a great attack to, when it comes to turn spin, but then chasing down 350 and then giving them a good lead is quite a task. So एक और double 100 तो चाहिए, or at least a 150 followed by other people contributing in some way or the other. So yeah, I mean, it's an uphill task, but Jaiswal जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, अगर तीसरी डबल सेंचुरी आ गई तो विनोद कामली has 3 double centuries, ना? Two. I mean, I hope वो ट्रैक पे ना चले जाए, but फॉर्म के ट्रैक पे रहे और उसको बेटर करते चले जाए. I wish, I mean, because 3. Yes, 3. Yes, the streaks that he's showing, Jaiswal, amazing. I mean, I'm just in, मैं ऐसा बैठा रहता हूँ, खाली देखता रहता हूँ, यार जयसवाल क्या बैटिंग कर रहा है. इसकी बैटिंग में और बाकी बैटिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना फर्क है. What level he is gone into right now,
especially here in this series. I mean, it's outstanding. So I mean, yeah, sad dismissal for Rohit, which मैं कल बोला था Rohit. I don't know why, but Rohit Sharma is going to face some trouble. और इतनी जल्दी मुझे नहीं पता था यार. 2 रन is too. I mean, कैप्टन है यार, तो कैप्टन को थोड़ा तो I mean, कितना भी बड़ा सेटअप हो यार, तुम्हारे लिए ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे यार, सेटअप करेंगे. तो if so you should have a plan basically. So you know that you should know कि जेम्स एंडरसन क्या एग्जीक्यूट करने वाले, क्या फील्ड प्लेसमेंट हो, तो आपको वैसा नहीं खेलना है. तो आप खेले हो इंटरनेशनल क्रिकेट इतने साल से, तो आई एम सैड फॉर दैट. Absolutely. I'd like to, Jimmy, come back to Joe Root for a while. The day Joe Root decides that I'll not give his wicket, he remains unbeaten throughout the innings. Do you think this is a perfect sign, A, for the England team that Joe Root needs to play the way Joe Root has been playing, and B, for the Indian team that we need to find a way around Joe Root, because till now we have been getting his wicket because he's been playing those RA shots that he plays under Bass ball. So how do you rate Joe Root's innings and the fact that he remained unbeaten throughout the innings? No, it's a fantastic innings, and yes, of course, a lot of it is about approach, right? हमने कल काफी डिस्कस किया था कि आपका जब अप्रोच चल रहा है, it looks very good. Approach meaning aggressive, risky, bold, whatever you want to call it. Do you want to call it baseball? Okay, let's say baseball approach. जब ये चल रहा है तो it looks good, but जब नहीं चल रहा है, you end up looking really silly and kind of downright ugly sometimes, right? I mean, that shot he played against Bumrah, you might call it ugly, you might call it reckless, silly, whatever it is, it didn't look good. अब जो रूट ने वो अप्रोच फिलहाल बंद किया, is that why he's got to 122? Absolutely right. But also the fact is Bumrah is not around. Yeah. Had Bumrah been here, I'm not saying Joe Root would have reverse sweep, but Bumrah has gotten him out many times before reverse scoops, before baseball. Bumrah has had his number the most, I think, of any Indian bowler. So let's not forget that Bumrah के ना होने से इस बंदे के अचानक रन्स क्यों आ गए? Because he's playing the old way? Yes, but also because you made the mistake of resting Jasprit Bumrah. जितना भी मैंने देखा है बुमराह को इस सीरीज में, I will put everything I have on the line and say कि despite Joe Root playing the Joe Root way, Bumrah would have probably got his number because he's got a psychological hold, right? वो hold क्यों आया था? He had that hold. Jasprit Bumrah, I think, should get the credit for forcing him into that stupid shot. जो रूट के मन में भाई मैं सीधे खेलूंगा, समय की बात है जब वो अंदर लाएगा. In that second test match or first test match? Second test match. Second. In eight out, the guy nicked off, right? So when a bowler has a psychological hold over you, that's what, to my mind, that's also what encourages you to try something different. Was it baseball? Of course it was baseball, but it's also knowing कि भाई ये तो मुझे या तो bold करेगा नहीं करेगा. Maybe I'll try to throw him off his lines with a reverse scoop. That day it was just Bumrah's day, but every time he's bowled to Root, he's had him subdued. So let's not discount the fact that he's got 122 because the best bowler of the series is also not here. Yeah, absolutely. That is a big factor, that without Jasprit Bumrah, your bowling automatically weakens, and also it gives a mental advantage to the opposition. ताउस भाई, एक और बात जो कल से चल रही है, कुलदीप यादव heavily underbowled. Only 12 overs in those innings. Yeah, there's a fact that if you play three spinners, one of them will be heavily underbowled. Do you think Kuldeep Yadav should have been that spinner? I don't know. I mean, Jadeja wicket निकाल रहे, अश्विन ठीक है, मतलब फॉर्म में नहीं है, मगर अश्विन is one of your main spinners. Even though Kuldeep might have done a bit better in this series, but then you cannot just simply side line Ashwin and then make Kuldeep the main spinner. तो हाँ, एक सफर तो करता है, बट देन कुलदीप को कैसे यूज करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस की बात होती है यार. कप्तान एट द एंड ऑफ द डे वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनको क्या अप्रोच लाना है, विकेट टेकिंग अप्रोच लाना है, या आपको कंटेन करना है रन्स, तो कैप्टन के ऊपर भी आ जाता है. तो अंडर बोल किया है या कॉन्फिडेंस, ऐसी कौन सी समय आया है कि भाई उनको रोहित शर्मा को विकेट टेकिंग नहीं दिखे कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप्स रोल इज टू टेक विकेट्स, not to contain runs like a Jadeja, or maybe at length आप ज्यादा खींचेंगे तो Ashwin can play a dual role of containing runs as well as taking those wickets. Jadeja contain runs, he gets wickets. Kuldeep purely wicket taking ability. अब आप वो उसको यूज कैसा करें,
क्या फर्स्ट इनिंग उनको ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है, और क्योंकि विकेट इज इजियर टू प्ले ऑन टू बैट ऑन, तो उसमें कंटेनमेंट ज्यादा होता है। वो रोहित शर्मा का आइडिया है कि यार कंटेन ज्यादा से ज्यादा करें, या आपको कुलदीप को सेकेंड इनिंग में यूज करके बंडल आउट करना है जब विकेट थोड़ा ज्यादा वर्स हो और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा टर्न हो, तो वहां पर आप फोर्स करने जाएंगे। आई मीन द ऑपोजिशन विल स्टार्ट फोर्सिंग देमसेल्फ प्लेइंग दोस शॉट्स, और उसी में दिस गाय कैन बाय दोस विकेट्स। तो मुझे लगता है अगर वो माइंडसेट है तो उसी की वजह से बेसिकली कंटेनमेंट नहीं करने की वजह से उनको कुलदीप को कि ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, that is one of the reasons that he's been underbowled. Otherwise, yeah, Kuldeep is one of the best bowlers. Yeah, he can do wonders. But then it's also up to the captain. मैं अपनी राय बोलूंगा तो या आई एग्री विद रोहित शर्मा, यार थोड़ा कंटेनमेंट चाहिए। शुरुआत में बैटिंग डिफिकल्ट होती है, बैटिंग थोड़ा इजी होती है, बट देन विकेट टेकिंग भी है, तो इसमें जडेजा ने काम किया है। तो जडेजा हैज गॉट दोस विकेट, सिराज विद द ओल्ड बॉल, आकाशदीप विद द स्टार्ट, जस्ट दैट अ गुड पार्टनरशिप केम एंड वहां पर कुछ हो सकता था अगर पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते थे। तो कुलदीप क्या वो रोल प्ले किए, आई डोंट नो इफ रोहित शर्मा इज कन्विंस्ड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग इन द फर्स्ट इनिंग। और आपने ये देखा होगा फर्स्ट इनिंग में ज्यादा रोहित शर्मा कुलदीप को यूज नहीं करते, तो वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की भी बात होती है। Yeah, that is a common factor that in the first innings you seldom see Kuldeep Yadav as compared to the second innings. Jamie, talking about Ben Stokes and his captaincy, we saw in the Rohit Sharma dismissal that he packed his leg side, short square leg. He had a mid wicket, and the basically the sign was that the ball will be in the middle and the leg stump. But then James Anderson doing what he has been doing best for the last 20, 25, 24 years, that outswinger outside the off stump. And do you think this combination of your experienced bowler and then the proactive captaincy of Ben Stokes, the way he plays with the batter's mind, what is your take on that? The way Ben Stokes plays with the batter's mind. See, Ben Stokes की कैप्टनसी को लेके बात करें तो look, the way that he leads, like with the batting approach that Joe Root took, या जो भी बेसबॉल, it जब चलता है तो तारीफ पे तारीफ, but because, and again I keep trying to make our viewers understand कि बेसबॉल वो नहीं है जो majority of Indian cricket fan actually thinks. I don't think Indian fan will ever get it. Baseball is not about batting at 5 per over. Sometimes I read the comments on my channel, on my YouTube. I think they don't know. Baseball is 3-4 components. Even if you don't want to use the word baseball, it is, as जितना भी मैंने सोचा है शो पे आने से पहले, it's just a high risk strategy. That is baseball. It can be batting, it can be captaincy, it is selection. Like I said before, baseball is bringing three club level bowlers to India and saying, "Ja beta khel le," right? That is baseball. So when it works, it looks very good. But like we saw at the Ashes last year, first test match, 9 wicket गिरे हैं, पूरा दिन खत्म नहीं हुआ, आपने declare किया. So these kind of things make Ben Stokes look very, very foolish. But जब Ben Stokes और Brendan McCullum को 1-2 टेस्ट मैच हारने में दिक्कत नहीं है, who are we to have a problem? We're not British, we're not English, we don't care what the England team does. हमें फर्क पड़ता है कि रोहित की टीम क्या करती है, right? So from that, why I'm saying is, from that aspect, Ben Stokes जो भी करे, जब तक चल रहा है सब ठीक है, right? राजकोट टेस्ट मैच इनकी धजिया उड़ गए, but still he was changing the field, right? If he believes when my team is trailing by 500 runs, I want to change the field every 2 balls, करने दो. That's his problem, right? How much of Ben Stokes' impact have we seen in this match? फिलहाल तो भाई नहीं. रोहित का विकेट had nothing to do with Ben Stokes, right? तीसरा चौथा ओवर है, रॉबिन्सन और एंडरसन स्टार्ट ही करेंगे. एंडरसन वही लाइन पे डालेगा, टुक 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 टुक. He didn't have to do much to get Rohit Sharma's wicket. That is what, like you said, that's what the guy has been doing for 20 years, right? Ben Stokes का batting क्या था? He got a ball that stayed low. So where Ben Stokes की तारीफ अगर हम करेंगे कि यहां से वो जायसवाल को कैसे रोकता है, right? I mean, like Tawaz said, I am in awe of that guy. Forget that clip, that straight drive he hit. मैंने कहा भाई, so now what is Ben Stokes going to do now? Shubman Gill तो कहीं ना कहीं विकेट अपना दे ही देंगे. How is he going to counter Jaiswal? How is he going to counter Sarfaraz? अगर Sarfaraz और
जायसवाल बैटिंग एक साथ करेंगे। अच्छी बात यह है कि जायसवाल अगर तब तक खड़े हैं जब सरफराज आएगा तो ये बहुत बड़ी बात है, बट इट ऑल्सो मीन्स कि द टीम वुड हैव लॉस्ट 3 विकेट्स। सो up till now I've not seen much that Ben Stokes has had to do in the few overs, लेकिन अगला जो 2 सेशन है I still think he's going to try and do things because that is what Ben Stokes does. It's like we keep discussing and the comparison जाता ही है कि विराट ऐसे थे, रोहित ऐसे थे, कोई बात नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों के फॉल्ट्स है। सो व्हाट ही डज नाउ आई बिलीव इज गोइंग टू डिक्टेट। क्योंकि देखो रन्स आपने बना दिए 350, मेरे हिसाब से बहुत बहुत टफ है। कैन इंडिया गेट पैस्ट 350? ऑफ कोर्स। विल बेन स्टोक्स अलाउ देम टू? दैट्स व्हाट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट। Yeah, that's very fair. But Jimmy, in this answer, there's a line you said, and I don't know. There are this line, and this is something that I usually think about now throughout the day. When you said Shubman Gill to apne wicket de hi denge, how have we come to this point where Shubman Gill, who also have runs under his belt now, even though it was a very shaky century the way he played in that innings, still he has a century recently under his belt, and he was a guy who gave us so much confidence in top of the order. How have we come to this position where when he plays good we are still not convinced, because obviously he looks very very shaky the way he's playing, and we don't have the confidence that he will stay on the crease for a long time? I'll tell you why I said that. मैं जब आज morning में आ रहा था, like I told you, the match that got abandoned, वो half an hour, 40 minutes, the guy I was driving with, we carpool, he said the same thing. He's like, यार गिल को क्या हो गया? आप तो पिछले 4 साल से कह रहे हो कि ये next captain है, क्या हो गया उसको, right? And this is what I'm saying. He's gotten in a situation में, hats off to him for getting 100 and a 91 either side of that duck, right? But he's not looking like the Gill which I believe all of us saw for the longest time, right? He's not getting out to, like the ball that Zach Crawley got from Akashdeep. Something he's allowing bowlers to get his wicket, right? Now, I'm the last person to guide you on technique, boy, but you can see it now. The gap has increased from the pad. The spinners, he's reaching out. तो जो भी इसके साथ हो रहा है गिल के साथ, I believe it's a byproduct of his own fault somewhere. But unlike other certain players like Shreyas Iyer, I still have faith that this boy will rectify those problems, which is why he's still around. The team is the selectors are far more invested in Shubman Gill. But like I said earlier, why I made that comment is I have not seen in this whole क्या था 12-13 पारी 35 पार नहीं किया. I think we've all, because it's Indian team, we've seen all these dismissals. ऑफ स्टंप कब गया? नहीं गया. ये फेंड करके थर्ड स्लिप तक बॉल कब नहीं गया ना. It's him not getting to the pitch. It's him playing over the pad. So it's just led me to believe that why I said that is he will give a wicket. I do not remember any bowler beating him for pace, spin going through. It's him lunging. So that's why I'm saying I hope he gets runs. I'm a big fan of Shubman Gill, but this inconsistency in the last 10-12 months on face value, on surface level, it's come because he's not playing with a compact defense. Yeah, I mean, fair enough. There are technical faults in his skill, but Tausbhai, okay, some technical faults have been there since he has started playing, since he has made his debut, or since we have started seeing him. But there are things like Jamie said, that the gap is increasing between his bat and his pads. His feet is coming out slower. What is the reason that a batter who knows a technique, who is good in a technique, starts losing it? वो क्यों होता है? आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी एक अच्छी टेक्निक है, और वो फिर वो गैप क्यों वाइड होता जाता है बैट और पैड के बीच में? क्या मेंटल ब्लॉक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ गेम टाइम है? वो भी नहीं कह सकते, क्रिकेट बहुत खेलते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट शुभमन गिल इज फेडिंग अवे फ्रॉम व्हाट शुभमन गिल यूजुअली इज? शुभमन गिल लाइक्स टू टाइम द बॉल. देखो, उनको ज्यादा पसंद है बैटिंग करना जब बॉल उनके पास आए. तो आप जब वो कंफर्ट जोन में रहता है, और नेचुरली ही इज बीन प्लेइंग दैट. ही इज ब्रेड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नियर चंडीगढ़, मोहाली, जहां पर विकेट्स बैटिंग फ्रेंडली होती है और बहुत ही आसानी होती है. आई मीन, फॉर एग्जांपल, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो तो लगभग वैसे ही है ऑलमोस्ट विकेट, जहां पर बैट्समैन ऑन द राइज खेलते हैं, फ्लो में खेलते. तो वो मुश्किलें, मतलब आप जब बड़े युवराज का भी देखिए, उनको भी अच्छा लगता था फ्लो में खेलना. एक बल्ला ऊपर से आता था और
फास्ट बॉलर्स को अच्छा टाइम करते थे, स्पिनर्स को भी फीट अच्छा यूज करते थे, मगर उनके में भी कमी थी एक डिफेंस में गैप स्पिनर्स के सामने, जहां पर बड़ा गैप आता था, बॉल थोड़ा लेट आता था, क्योंकि आपका पैर पहले आता है, क्योंकि आप स्लोली आते हैं, जैसे रोहित शर्मा ऑलमोस्ट क्लोज टू रोहित शर्मा आई वुड से, शुभमन गिल, तो आई मीन कॉम्पैक्ट डिफेंस आने के लिए आपको शार्प रहना पड़ेगा, ऑन द टोज रहेगा, ऑन द बॉल रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होने पड़ेंगे, क्योंकि आपका रिएक्शन टाइम डिफेंस के लिए पैड्स और बैट दोनों साथ में आना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गैप, बट देन आई मीन आप ग्रेजुअली देखेंगे वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, और यहाँ पर विक्रम राठौड़ का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप डिफेंस के आप आपके पास शॉट्स अच्छे हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आज जो थोड़ा बहुत शुभमन ने मिडिल किया है स्पिनर्स को बॉल, तो ऐसा लग रहा है कि यार कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर विक्रम राठौड़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा उनको डिफेंस में प्रैक्टिस कराना चाहिए। सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल ब्लॉक देन एनीथिंग। ही शुड बी टोल्ड दैट कि भाई इट्स नॉट दैट टफ यार, तुम कर सकते हो, यू आर अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। तो यू हैव टू रियलाइज कि टेस्ट क्रिकेट में जितना शॉट्स इंपॉर्टेंट है, रन स्कोरिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट डिफेंस है, क्योंकि 5 दिन का गेम है जिसमें आपको 2 दिन बैटिंग करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके पास वीक डिफेंस है, गैप बड़ा आपके बैट एंड पैड में, तो आपके चांसेस ये है कि यार रन्स के आप कितना भी अच्छा स्टार्ट लो, मगर वो एक ग्लिच की वजह से, तो यू हैव टू बी क्लोज टू परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। तो वो परफेक्शन कैसे लाना है, वो शुभमन और विक्रम राठौड़ को बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई it's a defense that they have to work on. I think he should take few tips from Pujara as well. Yeah, absolutely. I mean, they Rahul Dravid है वहाँ पर यार. I mean, forget Pujara. Rahul Dravid है यार. And Rahul Dravid not discussing about defense with him, surprising यार. Jimmy, do you think technical coaching is involved at this level when the likes of Rahul Dravid is? Because often the coaches themselves have said that at this level we don't teach techniques, we do man management. We are just around the players if in case they need any if they want to talk or something like this. Do you think there are technical classes or coaching going on in the nets or during the practice session at this level? I mean, look, I have not attended a test match session a batting session for a while now, but it was what? It was six months ago where we were covering the World Cup matches, and literally I watched an hour and a half. Vikram Rathore, Rahul Dravid spent an hour and a half in the nets at the Kotla. Sahil was there, just focusing on 2 batsmen. Suryakumar Yadav batted for an hour and 5 minutes. So of course they're giving time to those who want to, who need the time, right, and who want to focus. Again, does the coach influence a batsman's decision? No. Is Ravindra Jadeja bowling no balls because a lack of a coaching? Bharat Arun faced the same situation 5-6 years ago. जब ईशान शर्मा बहुत no balls डाल रहे थे. Somehow Bharat Arun and whoever he works with remove that problem from Ishan Sharma, right? Now it's not happening with Jadeja. वो हर मैच में 4-5 डाल रहे हैं. गलती क्या बॉलर की है या बॉलिंग स्टाफ की है? जवाब कहीं उसके बीच में है, right? Yes, but I get where your question is coming from. सबसे बड़ी जो दुख की बात मेरे लिए है कि जब से राहुल द्रविड़, who was my, let me say it again, people call me anti-Rohit, anti-Dravid based on a few comments. No, Rahul Dravid was my favorite player growing up, right? There was Sachin, but I had a lot of time for Dravid. How, like Tozbhai said, how that man, India's greatest number 3 batsman, how unke watch pe Shreyas Iyer जैसे talent का technique इतना बिगड़ा कि वो टीम से बाहर हो गए, स्क्वाड से बाहर हो गए. How शुभमन गिल जैसे प्लेयर जो कि Shubman Gill is Rahul Dravid's blue-eyed boy from the Under-19 World Cup to the NCA, right? So how these batsmen, again, it's not, I'm not blaming Rahul Dravid, understand. There's T20, there's focus, there's attitude, there's pitches, there's a lot of things, right? But when you see a guy like Jaiswal coming, और देखो, Jaiswal का खराब टाइम आएगा. कौन सा प्लेयर का, डॉन ब्रैडमैन का भी खराब टाइम आया था, Jaiswal का आएगा. But yeah, how do we prevent those bad times from coming sooner than later? How do we cut down those bad times, right? Shubman Gill, okay, last 3 innings you see 191, but उससे पहले 12-13 पारी में 35 क्यों नहीं क्रॉस पाए वो? जवाब मेरे पास नहीं है. But that is happening under the watch of Rahul Dravid. That to me is personally surprising and also very, very disappointing, because he was
the greatest Indian technician that I've seen, right? And I'm that old. Okay, I've seen the Dilip Vengsarkar bat as well. Okay, at number 3, but Rahul Dravid was known for being a certain kind of batsman. और क्यों राहुल द्रविड़ के टाइम के अंदर वो ऐसा number 3 नहीं है? At some level, questions will have to be asked about him. You know. ये भी एक और पार्ट, आई मीन टुडेज बैट्समैन दे, आई मीन आप देखेंगे कि दे एडमायर देयर शॉट्स मच मोर देन देयर डिफेंस. सी डिफेंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो आपको वो पैशनेटली एडमायर करना पड़ेगा. आई मीन दिल से. इट्स नॉट लाइक कि इट शुड बी लाइक वन ऑफ थिंग हमको एक बचाना है अपने आप को. आई मीन आर्ट ऑफ लिविंग एक बात हुआ करती थी, तो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डिफेंस भी होता है एक एस्पेक्ट. एक शॉट्स तो आई मीन शॉट्स इज समथिंग, इट्स ग्लैमरस, इट लुक्स गुड. आई मीन आप यशस्वी जायसवाल का देखिए तो he kept on admiring himself. Narcissism थोड़ा पार्ट आ जाता है क्रिकेटर में, but then you have to admire the defense as well. I mean, how Rahul Dravid used to, Tendulkar used to look perfect when it comes to keeping the ball down. आप हमेशा सोचोगे कि आप स्ट्रोक मेकर रहो, आप फ्लुएंट ड्राइव्स खेलो, तो भाई टेस्ट क्रिकेट में वैसा नहीं होता है. And which is what these guys, the mentors, the seniors in the team have to make them realize. Yep, fair enough. But Taus, do you think with the change that is coming in test cricket, that it's becoming more and more scores heavy, you need to score faster, because not just the template that England has set, but also we have seen that even the other teams have now started scoring at a bit faster rate, and that is the reason that the young guns that are coming up the ranks are getting more and more as you said, shots wale players instead of being the defensive players that we. Yes, Pujara is over defensive, that is a completely different breed of test cricket that you rarely get to see. Dravid, Pujara, these are the likes who becomes a wall and they rarely let you go pass through them. But Taus, do you think that with the change in test cricket, we are seeing a change in the young guns that are coming up, who are now more inclined towards playing at least more grounded shots than being not just the lofted shots? कि अगर पहले क्या होता था, पहले आप एक डेड डिफेंस भी करते थे, अब आप बैट उसके साथ चला देते हैं इन सर्च ऑफ रन्स, कहीं से डबल आ जाए, सिंगल आ जाए, बाउंड्रीज आ जाए. अरे पहले तो डेड डिफेंस पे भी तालियां बजती थी भाई, खड़े होके लोग एडमायर करते थे, यार क्या बात है, क्या डिफेंस है. सी change is the only constant भाई, change is the only constant which we have to accept. और modern day Gen Z जो हम देख रहे हैं आज, तो वो IPL obviously it's a huge inspiration. कितना भी हम डिनाई करें यार, टेस्ट क्रिकेट इज डिफरेंट, यू शुड प्ले डिफरेंटली, बट देन रियलिटी यही कि बिग बैश लीग हो रहा है, वो द 100 हो रहा है, यहाँ पर IPL हो रहा है, तो वहां से यंगस्टर्स जो बड़े हो रहे हैं वो इंस्पायर होके रोहित शर्मा के बड़े शॉट से, सूर्य कुमार या सरफराज या शुभमन गिल के ड्राइव्स और यशस्वी के पुल्स और कट से इंस्पायर होके आ रहे. बिकॉज तब गावस्कर खेलते थे, तब उनका एक माइंडसेट होता था, जो बड़े होके खेलते हुए आए हैं, तेंदुलकर देखते हुए आए यार, वो थोड़ा चेंज लेके आए, बट देन ही केप्ट द बेसिक्स राइट. ही केप्ट दैट कि भाई आपको सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं देखना है कि शॉट मेकिंग है, आपको दोनों मिक्स करके चलना है. बट ये इन्होंने सिर्फ शॉट मेकिंग स्किल देखी है, इन्होंने सिर्फ ड्राइव देखी है, तो और अग्रेसिव इंटेंट अप्रोच और वो एक एटीट्यूड भी देखा है कि यार कॉलर ऊपर करके आप खेलो. तो आज वो आपको वही सब देखने मिलेगा, बट देन दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सेप्ट. बट देन पीपल हु हैव बीन देयर, हु आर सीनियर्स, दे हैव टू मेक देम रियलाइज कि क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट ग्लैमर, इट्स अबाउट रियल क्रिकेट. क्रिकेट इट्स द रियल टेस्ट क्रिकेट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वहां पर आपको जितना सीरियस होगे, जितना आप लंबा खेलोगे, तो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, यू विल बी रिस्पेक्टेड. आप T20 खेलोगे तो आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा, स्टार स्टेटस मिलेगा, मगर टेस्ट क्रिकेट में आप परफॉर्म करोगे और जिस तरह से आप एक मोल्ड होके आओगे कंप्लीट क्रिकेटर में, तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी. वो फैन से अगर नहीं मिले तो वो जो बड़े क्रिकेटर्स है, लेजेंड्स है, उनसे मिलेगी रिस्पेक्ट. तो ये यू हैव टू मेक देम रियलाइज, दीज यंगस्टर्स हु आर आउट देयर थिंकिंग अबाउट कि यार अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, बेसबॉल खेल रहा है. यार मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इज नॉट सीरियस अबाउट दीज काइंड ऑफ मैचेस. यहाँ पर वो पैसा कमाने आते हैं क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर्स के साथ होता है डील और अच्छा पैसा कम. दे आर सीरियस अबाउट एशेज. तो अब जितना सीरियसनेस एशेज में देखोगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब जेमी भाई ने भी कहा कि क्लब क्रिकेटर्स आके यहाँ पर खेलते हुए जाते हैं और जितना भी मतलब बोल्ड स्टेप लेते हैं, तो जो एशेज में सीरियसनेस देखने मिलेगी आपको, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दे आर फाइन यार, दे आर फाइन, हैप्पी टू लूज, हैप्पी टू विन, मोरल विक्ट्री एंड ऑल. एशेज में आपको मोरल विक्ट्री मिलेगी, देखने मिलेगी. जेमी भाई, आई वांट टू नो, मोरल विक्ट्री वहां पर रहती कि इट्स ऑल अबाउट विन विन? I did not understand that statement when it was made. That just sounded like sore losers, to be fair. No, you're right. I mean, yeah, I feel like
शायद इस चैनल पे नहीं, but there was somewhere I was doing a show a couple years ago, और एक वर्ल्ड कप ईयर में, नॉट इससे पहले वर्ल्ड कप ईयर में, they were talking about the Ashes, so we know that इनका फोकस वो तो है. But again, I mean, I think whatever they're doing, it has a lot of merit. They want to come here with two bowlers who are 19 years old. That's their decision. We can only truly judge that after Dharamshala. ये मैच अगर वो जीत जाएंगे, we'll all have to eat a lot of humble pie, because majority of us have been laughing at this tactic, right? So I see your point, but I will reserve my judgment. जब तक ये I still say England have got this test match. अब जैसे किया तैसे किया, that's their problem. But if they walk away 2-2, who's going to look like fools? India for dropping Jasprit Bumrah. Sorry to be the negative person on this show, but फिलहाल it's advantage England right now. 4 दिन बाकी है, no doubt. Yeah. The match is about to start. Jamie, closing remarks. Will you promote Jadeja once again up the order, the left-hand combination that India has been doing to bring him at number 4, number 5, or do you think he should play at his own number? That's a very good question. I was all for it that day because Rohit Sharma, I believe उस दिन जो रोहित शर्मा को दिखा ना कि भाई अरे जाड़ आ रहे हैं, it helped him get 100, because Rohit Sharma unfortunately is that batsman, वो हर सीरीज में 100 मारते हैं, उसके बाद he doesn't get runs. If Jaiswal is walking out, अरे सरफू भाई, Jadeja, he acknowledged Jadeja, they've all acknowledged him, but इस सिचुएशन में अगर वही स्कोर कार्ड हुआ 30 पे 30, हालांकि वो तो नहीं होगा आज, I would want to see, just because of जो उन्होंने किया था लास्ट मैच में ना, डाल दो, throw them into the deep end. Deep end क्या है? They're already in the deep end. One guy's got 2 double centuries while being in the deep end. And सरफराज तो यार 26-27 के हैं, बहुत, मतलब I'm calling him पुराना चावल, but he's far from that. But the way he plays, he's पुराना चावल. In this situation, अगर रोहित होता और 3 विकेट होते, I'm all for जड्डू. आज का दिन, I think Sarfaraz has earned that batting promotion. Not promotion, because that's where he was supposed to bat. आज का दिन, खुदा ना खास्ता वो situation आ जाए, भेज दो उसको आज. I'm willing to bet it'll work again आज. Before Patidar also, you are saying at number 4. नहीं, 5. He's supposed to bat 5. You bat 5. That day 5 पे जड्डू आया था. Yeah. Patidar, I don't care whether वो 2 डक मारे. He's deserved to play one more test match. और मैंने ये कहा था, उसको छोड़ो, उसके साथ वो मत करो, उसको 4 पे रखो. बात है 5 पे. In my book, आज के मैच में सरफराज 5. That day it was fine. That day it made perfect sense. Yeah, absolutely. And ये देखो कनव, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आपने पतिदार को 5 पे कर दिया, सरफराज को, वो साइकोलॉजिकली उसको लग जाएगा, and then he's gone. फिर वो ये मैच में क्या तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा. So you have to have that trust and confidence, वो डालना चाहिए. See, that was सरफराज खान्स डेब्यू. तो अब वहां पर और बहुत सारी चीजें हो गई थी, जडेजा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई ही वाज सेंट इन. बट नाउ वी नो एग्जैक्टली व्हाट सरफराज कैन डू. आई मीन ही कैन स्टे देयर ऑन द विकेट, ही कैन स्कोर रन्स एट गुड पेस, ही हैज गॉट अ गुड डिफरेंस. तो वो एक फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया. तब बहुत सारी स्पेकुलेशन पे ट्रस्ट फैक्टर था, वो कैप्टन को भी आता है, देखा नहीं रहता है. तो यहाँ पर पटीदार को चेंज नहीं करना चाहिए. ही इज गोइंग टू, आई मीन इट्स गोइंग टू अफेक्ट हिम मेंटली. Yep. Yeah. Hopefully, Sarfraz, whenever he comes and he scores a lot of runs, his brother Mushir Khan is on 183 not out in the Ranchi match and looking to double 100. So hopefully 100 from Sarfraz too here, and we'll get to a decent total in the first innings. Thank you so much, Jamie. Thank you so much, Saus, and thank you so much to all of viewers for connecting with us. We'll see you at the T live now. Have a nice day and enjoy the match. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.